Hello and very good evening to all of you. So, how many of you have already joined in? Let me have a quick round, and let me see how many of you have joined in. Though it is yet to be 5. Just a minute left to be 5. So, Pooja, she's already here. Hello, Pooja. How are you? Okay, so there's Pooja, there's Reena. So these people are actually very regular. Prashant Sharma, hello. Manisha, hi. Rajinder, yes, Rajinder. Oh no, from Rajinder, this is Anita. I mean, I get confused with the profile name and who's joining from there. Mansi, hello. Shall we start? Yes. Yes, just 5 o'clock by my clock, and here I am with yet another session on English language development, spoken English, communication development, and of course, personality development, personality grooming and development, which I have not yet started though, because I'm doing English one after another, one after another. And perhaps in a couple of days we will do that as well. So I welcome you all on behalf of me and on behalf of SKD University, Hanumangarh, Rajasthan, for this online session of spoken English, soft skills, communication, and personality grooming training. प्लीज स्पीक इन हिंदी. मैं हिंदी में बहुत बातें करती हूँ. मनीष सहरन, अगर आप मेरा सेशंस अटेंड कर रहे होंगे तो आपको शायद पता है कि आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी ऑल्सो. मैं हिंदी में बात करने की बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत बोलती भी हूँ. लेकिन जब हम लोग एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, व्हेन वी आर लर्निंग अ लैंग्वेज, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस भाषा में बात करें ताकि उस भाषा से हमारी जान पहचान हो, उस भाषा को हम लोग ठीक तरह से सीख पाए. कुलदीप, राम राम मैम जी. यस, राम राम टू ऑल ऑफ यू. Okay, so here we go. So today I'm going to do two things with you, which is a continuation of what we did yesterday, the first part, and the second part is of course something new, but I think I touched upon it on my class on email writing. So two things. One is ideation, how to develop idea for writing anything or to speaking on anything. कंटेंट कैसे डेवलप किया जाता है, उस पर थोड़ा सा बात हम लोग करेंगे. जो और उसके साथ ही हम लोग फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में भी बात करेंगे. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो, तो कल मैंने एक बात कहा था आपको कि ऐसे राइटिंग के लिए आपको कंटेंट की ज़रूरत है. ऐसे राइटिंग के लिए यू नीड कंटेंट. और वो कंटेंट कहाँ से आएगा? तो वो कंटेंट मैंने आपको कहा था कि यू हैव टू रीड, यू हैव टू वॉच टेलीविजन, यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द सोशल मीडिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसे करके कंटेंट आपके पास आएगा, है कि नहीं? लेकिन मान लीजिए कि आप एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं या आप एक इंटरव्यू हॉल में बैठे हैं जहाँ पे आपको किसी विषय पे कुछ लिखना होगा या किसी विषय पे कुछ बोलना होगा, तो तब आपका कंटेंट कहाँ से आएगा, राइट? या फिर आप सोच रहे हैं किसी बारे में, यू आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट समथिंग. सो हाउ विल यू डू दैट थिंकिंग? हाउ विल यू डू दैट थिंकिंग? इसको हम लोग कहते हैं आइडिया जनरेशन. इसको हम लोग कहते हैं आइडिया जनरेशन. IDEAGENERATION. दिस इज नोन एज आइडिया जनरेशन. हेलो सारिका, निशांत, सदवीर, प्रियंका चौधरी, Nirdosh, Himanshi, and Shivani. Hi. Thanks for joining in, my dear boys and girls. So, ये आइडिया जनरेशन हम लोग कैसे करें और कहाँ से करें, इस विषय में आज हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे. हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे. I mean, we will try to learn about it. The first and the foremost thing is what is idea creation. किसी भी टॉपिक को अगर हम लोग लेते हैं, say for example, I take a topic of say
uh, mm, mm, I take a topic of, say, for example, uh, how important discipline is in a student's life. स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स लाइफ, राइट? तो इस विषय में मुझे या तो कुछ बोलना होगा या मुझे कुछ लिखना होगा। तो मैं क्या करूंगी? द फर्स्ट थिंग व्हाट विल आई डू? आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड इन द टॉपिक, importance of discipline in students life. So this is the topic. So two key words are here. तो बहुत important शब्द यहाँ पे है। एक है discipline, नियमानुवर्तिता, and the second is student life, छात्र जीवन, right? तो पहले मुझे discipline word को तोड़ना है। I have to take the word discipline and I have to find out that what does it mean. So discipline का examples हम लोग सोचते हैं कि समय का काम समय पे करना, मॉर्निंग में जल्दी उठना, उससे क्या होगा, what would be the benefit. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बहुत काम आता है, उसको मैं बोलती हूँ द फॉर्मूला ऑफ 5 W's and 1 H. द फॉर्मूला ऑफ 5 W's and 1 H. ये 5 W's क्या है? What यानी क्या, why यानी क्यों, who यानी कौन, when यानी कब, और where यानी कहाँ, ठीक है? और how, H1H is how, मतलब कैसे. So this 5 W's 1 H, if we try to put this formula in each and every sentence topic which is given to us, we can also be able to learn a lot of things. Gather a lot of things on this particular topic. Say for example, why don't you try it on yourself? That the topic I gave you is importance of discipline in student life. So if you put it in this 5 W's 1 H, how is it going to help you? Would you try for once? I'll just give you 30 seconds, 45 seconds to do, because otherwise there would be a silence in the communication process, which is not very acceptable in the virtual medium, where the communication is one way and the other way is you when you are writing the comments to me. तो I'm giving you 45 minutes. Just ये पांच जो है ना, 5 W's and 1 H, इस पे आप ये importance of discipline in students life को डाल के देखिए, how does it happen. 1 or 2 people, if you can please try, that would be very, very helpful for all of us. Okay, so we have Shiv Kumar, hello, Anita, हाँ, and we have Suhavna and Ruchi, fine. तो जल्दी कीजिए. So it's I'm giving you around 40 seconds to think about it. 40 seconds to think about it. कुछ भी आप हिंदी में भी कर सकते हैं, to start with. Importance of discipline in students' life, that is the topic I have given. Hello, Varsha. Bhagaraj M. Rathore. Hello, Mr. Rathore. How are you? Namaste. Okay, I think I have given you quite some time. Anyone who is up with it can keep writing in the chat box, in the comment box, and I can actually,
uh, start doing start interacting and giving feedback about your idea. लेकिन ये जो आइडिएशन का प्रोसेस है, ये आइडिया जनरेशन का प्रोसेस है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इसका फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन. इसका फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन. डिसिप्लिन इज डिसाइडेड ओवर बेस्ट फ्यूचर. हाँ चलो, थैंक यू. आई थिंक दिस इज अनीता. यस, आपने लिखा है. सिमू भी लिख रही है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना जरूरी है. आई थिंक आई डू अ फ्यू मोर सेशंस ऑन लैंग्वेज दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस. कैसे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे शायद हम लोगों को थोड़ा और ध्यान देना होगा. लेकिन यस, आज जिस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं वो है कि किस तरीके से हम लोग आइडिया को जनरेट करते हैं. तो द फर्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन हियर. So let us find out the words related to discipline. One is time management, one is self-management, the other one is say strictness, right? Student life पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि student life has a lot of focus and goals to be fulfilled. तो इन सारी चीजों को एक जगह पे हम लोग बटोर सकते हैं. We can actually gather all those things in a particular place, right? And what is the next one? What is the next step? The next step is find out which is the right idea and which is the wrong idea. बहुत कुछ दिमाग में आएगा, बहुत कुछ दिमाग में आएगा. But at the same time, बहुत इधर उधर की चीजें भी दिमाग में आते हैं. तो उसको सेग्रीगेट करना है. Discipline is very important in student life because without discipline a student cannot able in. Okay, very good Sadhvir Kaur, I'm sorry Sadhvir, बहुत अच्छा लिखा आपने. तो इस तरह से आप लोग आइडिया को जनरेट करेंगे. आइडिया को जनरेट करने के बाद the next is selection. The next step is selection. Hari Singh, Sharan, hello. Will not be able to learn smoothly. Yes, Sadhvir Kaur, absolutely. The next is selection. बहुत सारा ideas, दिमाग का बत्ती टक 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 जलता रहेगा. And then comes the selection process, जहाँ पे आपको तय करना है कौन सा टॉपिक या कौन सा आइडिया हम लोग लेंगे, कौन सा आइडिया को हम लोग रखेंगे, बाद में काम आएगा. No idea is a wrong idea. No idea is a useless idea. Every idea will be used somewhere or the other, right? The third step here is implementation. Idea है, उसको select किया कि किस तरह से करना होगा, और the second and the third is उसको अभी इम्प्लीमेंट करना. यहाँ पे जब हम लोग राइटिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, हरपिंदर, सरिता शुक्ला, नमस्ते आप दोनों को. जब हम लोग राइटिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तब व्हाट वुड बी द इम्प्लीमेंटेशन? द इम्प्लीमेंटेशन would be what? The implementation would be writing it, उसको लिखना, right? Say for example, I give you the word discipline. Okay, discipline is a key to success in life. With this thought, I want to start my topic. Okay, very good. Rina Chaudhary, Harpinder Kaur. Acha Harpinder, good to have you here. Right. So, एक idea. Now I'll give you one more idea. I mean, one more way of doing it. Say the word discipline you get. एक कीवर्ड आपको मिला डिसिप्लिन, एंड द सेकेंड कीवर्ड आपको मिला स्टूडेंट लाइफ. इससे जुड़ी हुई पांच शब्द आप लिखिए. 5 words related to discipline, 5 words related to student life. So maybe let me help you. 5 words related to discipline is timeliness, meeting deadlines. Third could be being strict on the timeline, so strictness. Fourth is
self restriction. Fourth is self restriction, and fifth is uh, say idleness, right? पांच. Okay, not always necessary कि आप लोग सारा positive words ही ढूंढे. You can always come up with words which are negative, which is negating the topic, जो topic के against में हो, which is negating the topic, right? This is number one. Then again with student life, what is happening? What is happening in student life? Student life पे आप ढूंढिए पांच वर्ड्स. स्टूडेंट लाइफ में 5 वर्ड्स ढूंढिए. हेक्टिक लाइफ, प्रेशर ऑफ एकेडमिक्स, प्रेशर ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, deviation of attention by due to social media, isn't it? आजकल ये बहुत है. Parents expectation, and then cut off marks of the various universities and colleges. आपने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ मार्क्स क्या है, राइट? तो कोई भी अच्छे कॉलेज में, कोई भी अच्छे जगह पे अगर आपको एडमिशन लेना हो, yes, golden age, absolutely Sadhvir. And Anita is saying that it's a stressful life. Yeah, there's a lot of stress in students' life. Right? तो ये सारे 5 words करके जब आप इसको इकट्ठा करेंगे, when you actually gather all these words, you will get a kind of word bank with you. जैसे कि मैंने आपको बताया था, content bank, word bank, vocabulary bank, ये रहेगा आपके पास. It will be there with you. Once you have these, it will be easier for you to put them into sentences and write the thing. Once you have that with you, it will be easier for you to put them into sentences and write that. And that is where idea generation comes. Actually, ideation is a design thinking process. हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, उतने गहराई तक हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज हम लोग का जो फोकस है वो इतना ही है कि कैसे किसी टॉपिक पे कुछ एक अच्छा हम लोग सोच के लिख पाए. बस उतना ही हम लोग का कंसर्न है, राइट? तो इसमें 2-3 चीज और आपको ध्यान रखना है. कंफ्यूजन. रुचि पुनिया इज राइटिंग कंफ्यूजन. व्हाट डू यू मीन बाय दैट, माय डियर? अगर आप इसको एक सेंटेंस में डाल के, मतलब स्टूडेंट लाइफ हैज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, डू यू मीन दैट? या फिर आप कंफ्यूज्ड है, मैं जो बोल रही हूँ वो नहीं समझ पा रहे हैं, कहाँ पे ये कंफ्यूजन वर्ड फिट होता है, वो थोड़ा आप मुझे जरूर से बताइए, ठीक है? क्योंकि आपका ये एक अचानक से कंफ्यूजन वर्ड मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है. द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, राइट? क्लाइमेट चेंज. कल मैंने डिस्कस किया था एक टॉपिक के बारे में, क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज जब मैं बोल रही हूँ, व्हाट डज इट मीन? Climate change is a natural phenomena. After the hot summer season comes the rains, and then comes the autumn, and then comes the winter. Is that a climate change? Or in today's perspective, climate change has a very, very different meaning altogether. ये सारा कुछ आपको डिफाइन करना होगा, यानी कि आपको समझना होगा अपने में, और उसके बाद उस समझ को एक पेन एंड पेपर में लिख के आपको बताना होगा कि कौन सा आप रखेंगे अपने पैराग्राफ के लिए या एसे के लिए, और कौन सा आप छोड़ देंगे, राइट? You will do the selection. You have to empathize with the topic. टॉपिक को समझने के लिए उसके साथ एम्पथाइज करना जरूरी है. अगर पहले से ही मुझे लगे कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ड्रग अब्यूज अमंग यंगस्टर्स, अगर ये टॉपिक आपको मिले,
तो आप लोग को लगेगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत गंदा चीज है, मुझे इस पे नहीं कुछ ध्यान देना. No, learn. Everything is a learning process. Learn by reading, understanding, observing, and thinking. So, ideation helps us in the thinking process. Ideation helps us in the thinking process, right? And then test. सेंटेंस लिख के उसको देखिए कि does this sentence actually expresses what I want to express. क्या ये सेंटेंस एक्सप्रेस कर रही है जो मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ. ब्रेनस्टॉर्म कीजिए. ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का मतलब क्या है? एक चीज को लेके बहुत सारे तरीके से सोचिए. यू थिंक फ्रॉम ऑल एंगल्स, वेरियस एंगल्स, then only you will be able to come to a situation where you will have a lot of ideas with you. When you have a lot of ideas with you, you are the king. आपके पास सारा कुछ है. आप अभी वहां से सिलेक्ट करेंगे कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है ना? Right? Say for example, I give you another word, and you find out 5 words related to that. Hello Manish, hello Nishan Sidhu, Subhash Godra. Confusion in my life. सारे लोगों के लाइफ में confusion है रुचि. So don't worry about that. Don't worry about that. That's the fun of life. ठीक है. गगनदीप सिंह, hello. अच्छा, अभी मैं आपको एक वर्ड देती हूँ. Sky. 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 Each one of you tell me one word related to sky. एक word जो sky से related हो. It could be the color of the sky. It could be anything. एक word जो sky से relate करती हो. Hello ma'am, गगनदीप सिंह, hi, hello, yeah. एक word जो sky से relate करते हो. You know, this is a application process of how we actually create our own vocabulary bank. थियरी से निकल के प्रैक्टिकली सीखो कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं. रीना, कविता, सारे लोग, सदवीर, सारे लोग मुझे बताइए कि ये जो स्काई है, एक वर्ड, स्काई इज ब्लू इन कलर. ओके, so I get a word blue. High thinking. Okay, Anita is saying high thinking. So sky she's taking as a limit. Okay, very good. Rest of you, come on. One word which you can relate to the sky. One word which you can relate to the sky, because it is necessary to do it in pen and paper. In pen and paper मतलब काम एक्सरसाइज करते करते सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको लगता है कि अभी हम लोग क्लास सुनेंगे और बाद में हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, ट्रस्ट मी ये कभी नहीं होगा. गुड इवनिंग मैम, डॉक्टर रचना शर्मा. हेलो डॉक्टर शर्मा, गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. सो अगर आप सोचते हैं कि अभी मैम का क्लास सुन लेते हैं फोन पे या फेसबुक पे या कहीं पे भी और बाद में प्रैक्टिस करेंगे, तो ये नहीं होगा. आपको बहुत ध्यान से देखिए, ये जो मौका है ना, ये सबको नहीं मिलता. ये सिर्फ आई डू नॉट नो how come this university came up with such a brilliant idea of making it free for all, the entire students community. So you actually sit with pen and paper in the class and you keep on noting down and reciprocating so that the learning process becomes a fruitful learning process. Sky provides positive energy. Birds fly in the sky. Sky shoot. Absolutely. Sadhvir, Simu, Monica. Very good. Thank you, Dr. Sharma, for agreeing with me. मुझे लगता है कि ये बहुत important है कि जो मैं बोल रही हूँ उसको आप थोड़ा सा implement कीजिए. जितना आप implement करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ ही, मेरे बाद नहीं. मैं जब 6 बजे चली जाऊंगी उसके बाद नहीं होता है. मैं 15 साल से आप जैसे बच्चों को पढ़ाते आ रही हूँ. मुझे मालूम है that tomorrow never comes, कि कल करेंगे. हम लोगों के साथ भी ऐसा होता था. लगता था कि बाद में करेंगे और वो बात का बात कभी नहीं आता है. ठीक है, तो जैसे कि
ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए. स्काई इज हाई, यस, सो स्काई इज रिलेटेड टू हाइट. एब्सोल्युटली. अभी आप देखिए, आपके पास शायद 5-6 न्यू आइडियाज है, न्यू वर्ड्स है रिलेटेड टू स्काई. किसी ने कहा व्हेन स्काई ब्लू, किसी ने कहा बर्ड्स, किसी ने कहा पॉजिटिव एनर्जी, किसी ने कहा हाई थिंकिंग, किसी ने कहा द स्काई इज हाई. So at least with these 4-5 words, you can make one paragraph on the sky. और इसको क्या बोलते हैं पता है? ये जो एक वर्ड सुन के ही तुरंत एक रिएक्शन देना, इसको बोलते हैं टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल. टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल. किसी ने क्लाउड्स नहीं कहा, किसी ने क्लाउड्स नहीं कहा, लेकिन शायद क्लाउड्स भी आपके दिमाग में होगा. स्काई, the cloud floats up on the sky, isn't it? So there are many gases in the sky. Okay, right. So it's the atmosphere. The atmosphere is made up of so many gases. Absolutely. तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल. टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल. मैं एक वर्ड बोलूंगी, आप तुरंत उस वर्ड से मिलता हुआ जो भी वर्ड आपके दिमाग में सबसे पहले आए, आप वो बताएंगे. ऐसा, दिस इज अ गेम ऑल्सो, यू नो, दिस इज अ गेम और एन एक्टिविटी I do when I do physical classes. Yes, so here she comes with clouds. And you know, I keep on telling words and my students keep on giving me the top of the mind recall they have at that particular moment. हो सकता है कि बाद में आपको बहुत सारा कुछ याद आए, राइट? बाद में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब मतलब एन मौके पे कुछ बोलना, that is important. Sky is the beauty of nature and it always it allows clouds and birds to come and fly. Okay, very good. Fly with freedom. Yes. The vastness. Sky also tells us, hello Manisha, sky also gives us an idea of vastness. कितना vast है ये, है ना? Right. See, in this way you can come up with a lot of words in your kitty, in your pocket. अपने पॉकेट पे बहुत सारा वर्ड्स आपके दिमाग में, आपके पास हो जाएगा. इस एक्सरसाइज को अगर आप करते रहेंगे ना घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ, खुद से, you don't need people around you to learn anything, you know. You do it on your own and you come to know about a lot of things. And you come to know about a lot of words. And these words, how these words are going to help you? These words are going to help you when you frame a sentence. When you frame more than one sentences and you put it in a paragraph form. इस तरीके से आपको ये काम करना होगा. Am I clear to all of you? Am I clear to all of you? चलिए मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ. हाँ, आप सोचिएगा. पहले मुझे तुरंत, you know, within 10 seconds you first tell me what comes to your mind, just like that when you listen to the topic. और उसके बाद कभी एक दिन हम लोग उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे. द टॉपिक इज इफ आई मीट गॉड. इफ आई मीट गॉड, अगर मैं भगवान से मिलूं तो. इफ आई मीट गॉड. तो इस टॉपिक पे द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू योर माइंड, द फर्स्ट विजुअल दैट कम्स टू योर माइंड, टेल मी दैट. Yes, Reena, I have seen and I have read also. I have read also what you have said. But my next topic which I have given today, just now, is if I meet God. So what is the first thing that comes to your mind? आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको भगवान जी मिल जाते हैं. So the first activity, the first thing, the first reaction which comes to your mind, tell me that. As I'm saying that since it is a virtual medium class, I will not be able to give you much time to think, but the first reaction doesn't need any time.
Okay, yes, she said it very correctly. She'll feel happy. I'll feel happiness. Okay, Anita, I agree with you. A feeling of happiness. ठीक ठीक. मैं विश मांगती. ओके ओके. हाँ, मैं भी मांग लेती दो चार विशेस. ठीक है. ठीक है. Anita is saying she will seek certain wishes to be fulfilled. Okay, okay. बाकी सारे लोग बताइए. Top of the mind recall. Top of the mind recall. God give me happiness. Monica is saying that she will seek happiness from God. Okay, okay, okay. एसके चौधरी आप क्या बोल रहे हैं? बताइए बताइए. ओके फाइन. चलो चलो. अच्छा, बाय द टाइम यू थिंक अबाउट गॉड, इफ यू मीट हिम, व्हाट विल यू से टू हिम? I will feel so happy. Okay, okay, great. Who what is a person called who doesn't believe in God? जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अमेजिंग. मतलब विश्वास ही नहीं होगा ना कि कैसे भगवान जी मिल गए हम लोगों को. एब्सोल्युटली. Okay, I be thankful to God for the golden opportunity. Lovely, lovely. See, you are only ideating new concepts, new ideas. नास्तिक उसको हिंदी में नास्तिक बोलते हैं. और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कोई? Anyone would like to try? You can see that in Google also. नास्तिक का इंग्लिश क्या है? एथिस्ट. एथिस्ट. नास्तिक का इंग्लिश क्या है बच्चों? एथिस्ट. ए ए टी एच ई आई एस टी. एथिस्ट. Who is a non-believer in God. Who's a non-believer in God. Okay. And who's a believer in God, like many of us, who's a believer in God, who like many of us, उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? थियस्ट. THEIST. यस, वेरी गुड वेरी गुड. तो धीरे धीरे आप लोग सीखिए कि कैसे वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए. सारे वर्ड्स हमें नहीं पता है. We do not know all the words, but we should know where to find them. मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप सारे लोगों के घर पे एक एक डिक्शनरी होगा. उससे मिलजुल बढ़ाइए और देखिए नए नए वर्ड्स. और यहाँ पे गेम है, पता है? there's a game called there's a game called word coach. एक गेम है वर्ड कोच बोल के गूगल में. वो खेलिए, बहुत अच्छा लगता है. दे विल गिव यू लॉट ऑफ वर्ड्स. आस्तिक. आस्तिक को बोलते हैं थियस्ट. ए को हटा दो तो दैट इज एन आस्तिक. राइट. वेरी गुड वेरी गुड. आई एम so I am huh? I am so
Okay, so there was some problem. So that is yeah. I think I'm visible now. Yes, yes. There was some problem. Am I audible also? Am I audible? Yes, I am. Thank you. So, so it is so important to understand. It is so important for us to understand that how we can actually learn new words. How we can actually learn new words, right? This is this is very important for us. This is very important for us because if we do not learn new words, we will not be able to understand or write new things, right? So this is very so it is very very important for us to understand things. Okay, now this is about ideation. थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? What about ideation? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है about ideation? Okay, the next thing that we will do today is letter writing. इसके लिए I will share my PPT with you. Is it visible? Is it visible to all of you? Okay. So there are two types of letters. First of all, we have to decide which letter are we going to write, whether it is a formal letter or an informal letter. Which letter are we going to write? Informal letter, if it is an informal letter, then we will not have to think about anything. Okay, let me tell you. So if it is an informal letter, we will not have to think of anything. Like I am writing to my friend, I can write about anything. I can write about anything, right? But when I am writing an application, when I am writing an application, when I am writing a letter for any official purpose, I have to be absolutely, careful about I have to be absolutely careful about what I am writing. So there, I have to take care of certain things. And the first and the foremost is the format. The first and the foremost is format. Right? पहला और बहुत important जो है वो है format.
Okay. Is it showing? Sense new ideas. Last thing. Is it showing? Why is this happening? So let me try once again, huh? Share screen. Share screen. Is it showing now? I'm sorry, my dear. I'll just explain this to you all, and perhaps later on I will be able to share it, because for some reason or the other, the sharing is not happening. The sharing is not happening. Let me try it once. Let me try it once more. Yeah. Never mind. We cannot actually waste the class timing. It is very, very valuable. So let me tell you, and I will speak to the concerned person, and I'll just let you know tomorrow, perhaps, that how it is happening. So, in formal letter, whom do we send formal letters? We actually send formal letters to people we do not know. हम फॉर्मल लेटर्स उनको भेजते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं. To an organization such as a bank, an university, a post office, an office, I mean, where we are seeking a job, we are seeking an admission. We write a letter for complaint. We write a letter for so many other things, right? So when we are writing something to a person whom we do not know, जब हम लोग किसी को लिखते हैं जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, we have to be extra cautious. और informal letter किसको लिखते हैं? Like we write to our friends and relatives and so many other people. ठीक? So while writing a formal letter, one side of the paper we will write. Nowadays, we hardly write any letter in the hard copy format. लेकिन फिर भी अगर हम लोगों को वो लिखना पड़ेगा, तो we will have to keep one thing in mind, that is
वन साइड ऑफ द पेपर हम लोग लिखेंगे, दोनों तरफ नहीं लिखेंगे. जैसे कि मान लीजिए इफ दिस इज द book, if this is the paper, we will write on this side and not on this side. So this is the page, we'll write on one side and not on the other side. And then again on the next page we will write on one side and not on the other side. ठीक है? क्यों? क्योंकि लोग ऐसे पढ़ेंगे. 1 2 3 4. In this way they will read, right? Planning, whenever I have taught you how to plan a writing, I have told you how to go about it. मैंने आपको बताया कि उसको कैसे करते हैं. So planning, you know, for any communication, how important planning is. And the third and the most important thing is ऑफिशियल लेटर्स को बहुत ही हमें सिंपल और टू द पॉइंट रखना होगा. ऑफिशियल लेटर हैज टू बी एब्सोल्युटली सिंपल एंड टू द पॉइंट, राइट? व्हाई? बिकॉज जो लोग हमारे लेटर्स को पढ़ेंगे, द पीपल हु वुड बी रीडिंग आवर लेटर्स विल हैव नो टाइम टू रीड अ स्टोरी दैट वी आर राइटिंग. We'll have no time to read a story that we are writing. Okay? So that is very, very important. That is very important. We have to keep a very important check on punctuation. We have to keep a very important check on punctuation. We have to be careful about the sentence cases. Sentence case आपको पता है ना? Sentence case का मतलब है small letter, capital letter, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस केस, राइट? और उसके साथ साथ हमें और क्या करना होगा? हमें प्रॉपर पैराग्राफिंग का यूज करना होगा, राइट? और दो चीज हमें ध्यान में रखने होंगे. एक है कि वी विल नॉट यूज एनी स्लैंग, एनी इनफॉर्मल वर्ड. नॉट ओनली स्लैंग, वी विल नॉट यूज एनी इनफॉर्मल वर्ड. ओके? And the second is, we will not make any spelling error. We will not make any punctuation error. We will not make any language error. Right? So these things are very, very important. These things are very, very important. We have to keep this in mind. Okay. I'll just try once if it is sharing. एक बार फिर से देखते हैं, because I wanted to show you a format of a letter. No. Somehow it is not happening. Somehow it is not happening. Okay, never mind. I will try to do it in the next class. I will surely try to make you see the format of an official letter. In the meantime, I know it would be very difficult for you to see, but can you see this? No, you cannot. Actually, please keep one thing in mind. Whenever you are writing a letter, it should start with a greeting. So what do we mean by greeting? Greetings mean, hope this letter finds you in the best of health and spirit. Wishes of the day, good wishes of the day, greetings of the day. ये जो opening sentence है ना, if you have pen and paper in front of you, please do write it. You should write, or rather you should start your letters with this opening lines. You should start your letters with this opening lines. Am I clear to all of you? इससे क्या पता चलता है? This is a courtesy. This is a social skill. This is a courtesy that we have to keep in mind. Of course, because yes, Reena Chaudhary has a very pertinent question that, ma'am, we know our principal, but to him we have to write a
to her we have to write a formal letter. Yes, because your relationship with the principal ma'am is a formal relationship. A day when you will go and start working, you will write letters to managers and your subordinates and your bosses. There also you will have to, you know them, you sit with them, you work with them 24 into 7. But then also you will have to write a formal letter to them because the relationship is formal. Informal letter you write to your parents, your sisters, your brothers, your friends, etc. Am I clear? Am I clear to all of you? Informal letter you write to your brothers, sisters, but any official relationship, when there is an official relationship, you have to write in a very, very official manner. Even if you write a letter, an absent note to your class teacher, you meet your class teacher every day. Perhaps you do not meet your principal ma'am every day, but you meet your class teacher every day. There also, you have to write a formal letter. Because, please understand, I totally agree with Reena Chaudhary's question, and I'm very happy she has put this up, that people whom we know, why should we write a formal letter to them? It depends upon our relationship with them. It depends upon our relationship with them. So, greetings. ग्रामेटिकल एरर, या ऑफ कोर्स वी हैव टू कीप इन माइंड ग्रामेटिकल एरर. कुछ भी लिखे, कुछ भी बोले, कम्युनिकेशन किसी भी भाषा में अगर ग्रामर ठीक नहीं है तो वो कभी ठीक नहीं होगा, तो वो कभी ठीक नहीं होगा. ठीक है? सो प्लीज कीप इन माइंड दैट. प्लीज कीप दैट इन माइंड. यू हैव टू टेक केयर ऑफ ग्रामर. यू हैव टू टेक केयर ऑफ ग्रामर. Yes, am I clear to all of you? Am I clear to all of you? So this is about letter writing. This is about ideation. Please do practice ideation. Please do practice ideation and also take care of the grammar, the writing, and all the things that you do. Right? So I'll be leaving your class today till here. I'll see you tomorrow with yet another very interesting topic on English communication. Thank you for attending the class, and please do remember to spread this word that a class is going on behalf of SKD University. SKD University has taken the initiative to do this online classes for every student around, and in the process there is a huge learning, interaction, English language exercises, practice that is happening, and you got to tell this to your friends, brothers, sisters, and everyone. Thank you for attending the class. See you tomorrow at 5 o'clock. Till then, you keep practicing English.